oblique small d. Now here people make mistake. Even the higher authorities, they write capital M, capital L, capital D, MLD in one line. It is per day, not it is continuation of MLD. Units of energy. Joule, capital J. Magnitude is watt second. Watt is expressed as capital W. Kilojoule, small k, capital J, kilowatt second. Then megajoule, capital M, capital J, capital M, capital W, small s. Kilowatt hour, small k, capital W, small h. Now this kilowatt hour is known as unit of electricity. Our electrical bill in house or in industry or office comes in these units. What is common domestic rate of one electrical unit? Normal. ₹7 per unit. Unit of power. Watt, capital W, is joule per second. Kilowatt, small k, capital W, kilojoule per second. And megawatt, capital M, capital W, capital M, capital J, oblique small m. Megawatt is again a very big unit. And where it is used? In measuring or expressing power of a powerhouse, electrical generating units. So many megawatts powers are there. It may be hundreds and thousands of megawatt power of a normal powerhouse. Units of concentration. Nanogram per liter, small and small d, oblique capital F, is to minus 9 gram per liter. Microgram per liter, mu small d, oblique capital L, is to minus 6 gram per liter. Milligram per liter, small m small d, oblique capital L, is to minus 3 gram per liter. Nanogram per cubic meter, small n small d, oblique small m raised to 3, is to minus 9 gram per meter cube. Microgram per cubic meter, mu small d, oblique small m raised to 3, is to minus 6 gram per meter cube. Milligram per cubic meter, small m small d, oblique small m raised to 3, is to minus 3 gram per meter cube. Now all these symbols are very important. If you don't write symbols as given in SI unit, it will not convey any meaning. Thanks. I would request the technical team to play another section. I think there can't be any questions.
because everything is fixed. Yes. The ML is always there. So the have to write the M small and capital L. The product is in market. They are always writing, even Amul is writing ML in small. In market, everything is not going well. That's why we are I said, no, even authorities also write that way. But MLD is capital M, capital L, oblique, small d. Now, my next talk, I maybe find more interest than the previous one. Overview of air pollutants and control. Importance of air. Amongst the most indispensable things, air, water, and food in our life are essential. In our days, some 40 years back, there was a picture by, I think, Manoj Kumar, Roti, Kapada or Makan. And we thought that these are the essential things. Out of this Roti, Kapada or Makan, only roti is essential. Without cloth, our Jain Munis, even our Naga sadhus, don't need any cloth. Even some tribals in Andaman Nicobar, they also don't wear cloth. So cloth is not essential. Makan, nomadic tribes move from one place to another place with all their belongings in a cart. So they don't have house. So makan is also not an essential. What are essential? Food, water, and air. What is most essential? One can survive without food a few months and without water a few days. Can't survive without air a few minutes. Almighty God has bestowed us ample quantities of all these three essential things in nature. An average individual human being needs 1 kilogram of food, 3 kilogram of water, 15 kilogram of air. These are for average, except made different quantities. Even sedative people like we ordinary people and children may need less. So the quantities of these things are in ascending order. Cost of procurement of these things are in descending order. Now 1 kilogram, 3 kilogram is greater than 1 kilogram, 3 kilogram is greater than 3 kilogram. But the cost of procurement is descending order. Food is costlier than water, and water is costlier than air. Out of all these things, air is the most essential. Therefore, we will concentrate on air pollutant and control measures. Quantity of food required by man. Our body can be considered as an engine. It requires
fuel as food and oxygen to burn the fuel. The fuel as food we take through our mouth, and oxygen of air we breathe in our lungs. Our lungs transfer oxygen to the smallest part of our lungs known as alveoli. The oxygen oxidizes the carbon derived from food and provides energy needed by our body. A very simple equation, C plus O2 is equal to CO2 plus 94.6 kilocalogram energy. So when we burn 12 gram of carbon, we produce 94.6 kilocalorie energy. Hence, 1 gram carbon gives 94.6 divided by 12, 7.88 kilocalorie. An average human being needs 2000 kilocalorie per day. Hence, actual quantity of carbon the blood required is 2000 divided by 7.88, 254 grams. Considering glucose as food, formula of glucose is C6H12O6, molecular weight 180, which contains 72 gram carbon per mole. Therefore, 1 gram of carbon is equivalent to 180 divided by 72, 2.5 gram of glucose. Hence, 254 gram of carbon requires 254 multiplied by 2.5, 635 grams. That is equal to 0.635 kilogram of glucose. And therefore, we need about 1 kilogram of food. Now, this approximation is that whatever food we use, it is not as concentrated as glucose. Quantity of air required by man. Similarly, requirement of air can be worked out from the consumption of 254 grams of carbon. We have C plus O2, CO2, which shows that 1 mole of carbon is 1 mole of oxygen, that is 12 grams of carbon is combined with 32 grams of oxygen. Hence, 1 gram of carbon needs 32 divided by 12, 2.67 grams of oxygen. Therefore, 254 grams of carbon needs 254 multiplied by 2.67, that is equal to 678 grams of oxygen. The oxygen in air is about 21% by weight. Therefore, 678 gram oxygen is equal to 678 multiplied by 100 divided by 21, 3229 gram of air. Considering efficiency of lungs as 25%, actual requirement of air is 3229 divided by 0.25, 12,916 gram of air, or 12.9 kilogram of air. So again, approximately 15 kilogram of air. So this is not expressed anywhere in any text. I have just thought of and worked out myself. Composition of air. Serial number, components of air, concentration of gas in percent. Nitrogen is 78.09. Oxygen 20.94%.
Now, nowadays there is a fashion of filling nitrogen in our vehicle tires. So it is just an eyewash. When we fill up air, we have 78% nitrogen in there. Argon, 0.93%. Carbon dioxide, 0.04%. Neon, 1.4 into 10 raised to minus 3. Helium, 1 into 10 raised to minus 4%. Now, why in this composition, why these all different gases are required in atmosphere? What is the use of nitrogen in air? Nitrogen is supposed to be noble gas, inert gas. It normally doesn't react with any other, especially it cannot be oxidized easily. It reminds me a story in the Mahabharata. Shishupal and Sri Krishna were relatives, and mother of Shishupal took the promise from Sri Krishna that you don't kill my son. Sri Krishna said, I will tolerate his 100 abuses. If he do not stop, I will kill him. So nitrogen is such that he tolerates normal temperature. When temperature is exceeding beyond 1000 Celsius or so, it is oxidized and anions are formed. Four forms of nitrogen oxides are there. Now, in atmosphere, lightning is occurring every second throughout the globe. And lightning produces temperature of hundreds, thousands of degrees Celsius. In that case, nitrogen is oxidized to nitrate and nitric acid. Along with rain, it falls on ground and it is a food for organisms. Our fertilizers are NPK. Out of NPK, nitrogen is one of the components. So we receive fertilizer by just lighting and oxidizing nitrogen. God has nothing even useless. Everything has some purpose. Next one is oxygen. Without oxygen, no living thing survives. And its proper word for Gujarati is pranavayu. Pran means life. Wherever life is there, maybe aerobic or anaerobic, oxygen is there. Now, you being microbiological people, can you tell me the difference between aerobic and anaerobic? Normal answer I get that aerobic needs oxygen, anaerobic don't need oxygen. That is not true. Anaerobes are also living beings. So without oxygen, they can't survive. But they don't take dissolved oxygen in water. They just split up chemical compound like glucose, where 6 oxygen are there. So just splitting chemical compounds, they get oxygen
So without oxygen, even anaerobe cannot survive. Argon. When 90% argon is there. Argon is also inert gas. And it is used in providing atmosphere without oxygen. Especially welding and such other uses, argon is used. Carbon dioxide, 0.04%. Now, can anybody give me what will be carbon dioxide in our house? You can refer Google, no problem. Will I get answer? What is carbon dioxide in atmosphere today? Is anybody coming out with answer? It is some 412 ppm or so. So 1% is 10,000 ppm. So if ppm divided by 10,000, you will get this 0.04. Neon. Neon is advertising lights and used in tube lights. Helium. Helium is the lightest gas, lighter than hydrogen. And in balloon, helium is filled and it will rise in the sky. Air pollution definition. This definition I have taken from a book of Air Pollution Act. Air pollution may be defined as the presence in the outdoor atmosphere of one or more contaminants or combination thereof in such quantities and of such duration as may be or may tend to be injurious to human, plant, or animal life or property, or which unreasonably interferes with the comfortably enjoyment of life or property or the conduct of business. So the keywords are contaminants, quantities, duration, injurious, and interference. So this is a legal definition of air pollution. Air pollutants as sources. So there are 4 categories of air pollutants. First one is gaseous pollutants, such as sulfur dioxide, NOx, CO, CO2, O3, HCl, QS, hydrocarbon, etc. Now, whenever I ask my environment students that what parameters you measure in a stack, they just say SOx, NOx. SOx is not a pollutant. SO2 is always to be expressed.
NOx is okay because 4 types of ox- oxidants of nitrogen are there. CO, carbon monoxide. Carbon monoxide is silent killer. It has large affinity in combining with blood than oxygen. And silent killer, when you inhale carbon monoxide, you don't feel anything. You will feel nauseous and sleepy. And poor families, those who can't afford heater, room heater, and they don't have separate bedroom, in one room, all people sleep together and light a small cigarette burning. When all is burning in a single room, oxygen is depleted. When no proper oxygen is there, no proper combustion of carbon is there. So instead of producing carbon dioxide, carbon monoxide is produced. And in sleeping, they don't feel any unconsciousness. They sleep forever. So these are some incidents occurred. Carbon dioxide. Carbon dioxide is considered pollutant so far as we consider its effect of greenhouse gas. But carbon dioxide is essential for our life. When sun rays are falling on vegetable, carbon dioxide with photosynthesis is converted to new vegetable cells, and it serves as food for all living beings. So carbon dioxide that way essential. We cannot remove all the carbon dioxide from atmosphere. Then O3. O3 is ozone. O2 is oxygen. Oxygen is very essential for our life. Ozone is 2 into 1.5 or equal to 3. O3. But to be 1.5 is not desired in society or anywhere. It's a pollutant and not beneficial. HCl, hydrochloric fumes, is acidic and injurious. H2S, hydrogen sulfide gas, very obnoxious smelling. Even a small quantity will be detected. Then hydrocarbons. So many hydrocarbons are there. These are also polluted. Then particulate matter such as dust, pollen, fiber, etc. Now dust we normally measure as particulate matter 2.5 microgram, which once enters our lungs, it do not come out. It's a respirable dust. So it reduces the capacity of our lungs and injurious. Pollen. Pollen from the flowers. It is allergen. And during month of October, when flowering season is there, a lot of children are suffering from cough and cold. So it's an allergen. Allergy is cough.
and fibers. Fibers go into our lungs and produce different diseases. The fibers are of cotton, then I just forgot the name of the disease, but it causes lungs disease, pneumoconiosis, I think. Orders of various volatile substances of solvents, decaying materials, distilleries, etc. So, orders are not considered by Pollution Control Board as pollutant. But when complaints came from the public residing near such industries which were giving orders, a committee was formed. I was made chairman of that committee, and I had to perform the duty of smelling dogs. I go to the nearby industry, feel the smell, and find out the reason and suggest solutions. Noise was also noticed very lately, but it's also a pollutant. And there are norms in IS. What should be the noise level in factory, outside factory, during night, daytime, near school and hospitals, all these standards are laid down. In our ancient literature, Purana, when it is mentioned somewhere, Raksasa were giving very high noise. And because of that, even the miscarriage in ladies occur. These are recorded in our literature. There are so many bad effects of noise. People can't sleep easily, you can't read nicely, and about 10 to 12 bad effects of noise are there. Sources of air pollutants. These are broadly stationary and mobile. Air pollutants which are from burning any waste locally, or the pollutants from our stack. These are stationary. But the pollution from moving vehicles on highways or in streets, these are mobile pollution. Now, how to control these pollutants? Control measures for particulate matter, settling chamber, cyclone separator, wet filters, and electrostatic precipitators. So these are equipments used for controlling particulate matter. Control measures of gases, venturi scrubber, spray towers, pack towers, and catalytic converters. The last one, catalytic converters, is used in our vehicles. Euro 4 and Euro 5, we have our BIS
These vehicles are having catalytic converters, and NOx and SO will be converted or added to catalytic converters. Efficiency of control measures are given in this table too. Serial number, control measure, efficiency range, and typical. Settling chambers, cyclone. Settling chambers have minimum efficiency, typically 30%. Cyclone has some 80%. Bed filters has 98% efficiency. Electrostatic precipitators has maximum 99.5%. Venturi scrubber is 97% efficiency. Spray tower has 85% efficiency. And cut tower has 98% efficiency. Pressure drops in control measures, of water column. Now, why we should worry about pressure drop? Pressure drop, more pressure, more money we have to spend on energy. Cyclone separator has 150 water column, or roughly it is 1500 Pascal pressure. Bed filter is also the same. Electrostatic precipitator is also the same. Spray tower has minimum pressure drop 40 Cut tower is slightly more 200 and Venturi scrubber has the maximum 750 of water column. Now, the relation between water column and Pascal. 1 of water column is equal to 9.81 Pascal. But I have taken 9.81 as 10. So just round it up by multiplying 10. Now you may have some questions in this. Thank you, sir, for your beautiful presentation. So my question is, in that we generally focus over the chemical compounds or chemical related compounds as a pollutants, not as a biological originated pollutants. Can we add in that, as like just we mentioned, allergic compounds or the pollen grains as to be the allergic one and they are pollutant, but still we are not able to define their particular range or their type. So is there any scope is available to add such things in this as a pollutant or biological pollutants rather? Biological pollutant is pollen. So far, no standards are specified, but our advice is to remain away from the flowering flowers. Okay, sir. Audience, any more questions? Thank you again. Thank you so much, sir. I will request Ravi Tank, sir, to please come up on stage and tell us state, sir. Please, have the stage, sir.
ಈ ನದಿಯ ಕಾಡು I would request GPCB audit team, conveyors and secretary to come up on stage. Join for the group photo, please. I would also request Dr. Neepa Pandey Madam to join us on stage, please, for the group photo. Ma'am, please. I would request the audiovisual team to lift up the projector screen, please. We would like to announce a bio break of 10 minutes. So everyone can just freshen up and come back within 10 minutes. Thank you.
Chemistry, you know, Namaskar. Sri Swaminarayan. We also request him to welcome sir with a token of love from Atmiya University.
Sir is a director R&D, CEO, and DFM, Equipreg Research Laboratories Private Limited. He has an educational qualification that involves MPharm, PhD, and also a degree of law, LLB. I would request Sir, not wasting very much time, to just continue with their lecture. So please. Would request the audio visual team to put down the projector screen. Over to you, sir. Yeah, good afternoon to everyone. So, rest assured, I will not take much of your time because I understand lunch is waiting for you. So, and you are also waiting for lunch better than me. So, I will not take much of your time. And I think since morning I came to know that you have undergone various kind of sessions, like oral presentations, then followed by, of course, some expert sessions. And I think this is the pre-lunch session. Always when I conduct the session, usually people give me either pre-lunch or post-lunch. अगर बुक बढ़ाने के लिए या बुक खा लिया हो तो फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो यस तो आई थिंक सिंस यस्टरडे आप लोग जो टॉपिक्स अलग अलग सीख रहे हैं समझ रहे हैं it is very good thing that your university is continuously arranging such kind of programs which of course after maybe completion of 6 months 12 months I don't know you are in which level MSc which year which semesters. But जब आप इंडस्ट्री में आते हो आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ एमएससी और मे बी एज रिसर्च स्कॉलर अगर आप हैं तो पीएचडी करें सो व्हाट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल सो मेरा जो टॉपिक है इट इज मोर फोकस्ड ऑन द रेगुलेटरी एस्पेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमएससी if you would like to come to some industry particularly pharma industry which is a ever booming evergreen industry जिसको हम बोलते हैं तो अगर आप वो इंडस्ट्री में आपकी करियर को दिशा देना चाहते हो एक बढ़ाना चाहते हो तो व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स व्हिच एज अ स्टूडेंट्स यू हैव टू एम्बाइब क्योंकि अभी जो आपके पास अगर एक सेमेस्टर होगा 2 सेमेस्टर होगा जो भी पढ़ाएगा पीरियड बाकी है आपके स्टिल यू हैव टाइम यू कैन एनहांस योर स्किल और यू कैन शार्पन योर स्किल ये प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर इससे क्या होगा सर्टिफिकेट तो मिलेगा बट इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट की वैल्यू है किसकी वैल्यू है अगर आप इंडस्ट्री में हमारे पास जैसे आते हो तो स्किल्स ये जो 2 दिन से आप कर रहे हो ना वो आपकी ब्रेन का चर्निंग है डायमंड की वैल्यू सबको मालूम है लेकिन वो कहाँ से आता है वो भी सबको मालूम है जब वो रो फॉर्म में होता है 100 रुपये किलो भी उसका भाव नहीं होता तो वही जब एकदम शार्प हो जाता है एक पर्टिकुलर इतने घसाए करके जो बाहर निकलता है और जो जितना ज्यादा घसाई सहन करेगा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो जो डायमंड ज्यादा अपने आप को घसेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी सिमिलर वैल्यू आपकी किरण के बारे में भी सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके आपको जितना ब्रेन चर्निंग करवाओ by attending not only such kind of seminars but actively involved in such kind of seminars तो अभी हम जो भी
30-40 मिनट डिस्कस करेंगे, उससे ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक नया दृष्टिकोण मिले। आप समझो कि आज जो फार्मा इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में, और वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वर्ल्ड में वी आर ऑन द थर्ड नंबर। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो पूरे वर्ल्ड का, यूएस में भी अगर कोई दवाई 3 दवाई बेच रहा है, बेची जा रही है, 3 में से 1 दवा मेड इन इंडिया। यूएस की बात करो, कनाडा की बात करो, यूरोप की बात करो, कहीं के भी बात करो, आउट ऑफ 3 मेडिसिन 1 मेडिसिन इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया फार्मा इंडस्ट्री हैज प्रूव्ड इट्स स्ट्रेंथ, और इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज में आप जैसे लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी अगर फॉर्मुलेशन बनता है फार्मा इंडस्ट्रीज का या भी मेडिकल डिवाइस का, उसमें माइक्रोबायोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई I select a topic which says like this: regulatory microbiological testings for pharmaceutical and medical device registration, Indian perspectives. तो क्या आज के तारीख में हमारे इंडिया में रूल्स रेगुलेशन है, किस तरह माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रीम का इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा मैं आपको एक दृष्टिकोण देने की कोशिश करूंगा इन नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स। सो बेसिकली इंडिया की बात करें तो हु गवर्न्स दिस फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है तो उसको कौन गवर्न करता है? यूनिवर्सिटी कम्स अंडर व्हिच? यूजीसी, राइट। सिमिलर वे कोई फार्मा इंडस्ट्री है, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिसको बोल सकते हैं, उसका कंट्रोल रेगुलेशन कौन करता है? दैट इज एजेंसीज कॉल्ड सीडीएससी, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली, and of course it having various regional centers, including Gujarat we have at Ahmedabad regional centers, and it is the only government body which regulates the medical device also. अगर हिरार्की की बात करें तो ये भाई साहब को सब जानते ही है, हमारे गुजरात के खास है, गुजरात के खुद के है, और आज यहाँ पे पधारे हुए भी है अपने द्वारिका और राजकोट में कल आने वाले। अब मुझे मालूम पड़ा कि आप लोग भी कल उनको 1-to-1 मिलने जा रहे हैं। आपकी इच्छा हो या ना हो, बट जाना तो है। मुझे बताया गया कल संडे में वर्क कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है। ओके, चलिए अभी यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, तो यहाँ मिल लीजिए, कल 1-to-1 से बात कर लीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली टॉप मोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सेकंड भाई साहब है, वो भी हमारे गुजरात से है, भावनगर से है। कोई जानता है उनका नाम, जानता है कोई? मनसुख मांडविया, या डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो हमारे भावनगर कंस्टिट्यूंसी से है, वो भी गुजरात से है, एंड नाउ ही इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। उसके नीचे आते हैं डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। उसके नीचे जो मेन की पोस्ट है, जो भी हमारे डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हु हेड्स सीडीएसयू। सीडीएसयू इज ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड को बोलते हैं डीसीजीआई। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके हेड है वाइस चांसलर, राइट। तो सिमिलरली सीडीएसयू का जो गवर्नर है, उनका नाम है डीसीजीआई, और ये भाई साहब है डॉक्टर रघुवंशी साहब, ही इज राइट नाउ डीसीजीआई ऑफ आवर इंडिया। ये 3 लोगों को इसलिए मैंने आपको दिखाया, you should know, because if you want to come in pharma industry, you should know कि हम इसके अंडर में बेसिकली गवर्न होके ये पूरा काम कर रहे हैं। Again, there is nothing but the how CDSO hierarchy looks like. जैसे मैंने बताया DCGI जो अपने रघुवंशी साहब है, उनके अंडर में डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर होते हैं, उनके अंडर में अगेन असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर है, जो अलग अलग डिवीजन है, फार्मा डिवीजन, मेडिकल डिवाइस डिवीजन, डायग्नोस्टिक डिवीजन। Now coming to our main core focus, प्रोडक्ट्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। कौन कौन सी चीज का हमें माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे टेस्टिंग करना होगा? देखिए, कोई भी चीज, तो दवाई है, ड्रग्स है, मेडिसिन है, मेडिकल डिवाइस है, अगर मान लीजिए उसमें प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं हुआ है, कितने बड़े इश्यूज हो सकते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के अंडर में आता है, जहां आप लोगों का रोल है। आप कोरिलेट मेरे सेशन को इस तरह करिएगा
कि दिस स्लाइड्स इज एप्लीकेबल टू यू, कहते हैं यहाँ आपका रोल है। अगर यहाँ आपने आपका रोल नैतिकता से नहीं निभाया, पूरी निष्ठा से नहीं निभाया, तो खराब दवाई, खराब डिवाइस मार्केट में जाएगा, वही आपका ही कोई नजदीक का या दूर का रिश्तेदार खाएगा या अपने बॉडी में डलवाएगा। अगर इम्प्लांट है तो हो सकता है अगर प्रॉपर टेस्टिंग होके नहीं हुआ है, प्रोडक्ट फेल था, आपने पास डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज नाउ यू आर द रजिस्टर्ड, लेट्स अज्यूम आज से 5 साल के बाद आप रजिस्टर्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, तो आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू है, जैसे डॉक्टर्स की वैल्यू होती है दवाई देने की, आपका भी एक वैल्यूएशन है कि आपके रिपोर्ट्स के आधार पे ड्रग्स मार्केट में आती है या मेडिकल डिवाइस मार्केट में जाता है, आपके डॉक्टर वो सर्टिफाई नहीं कर सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका भी लेवल डॉक्टर्स के लेवल जैसा ही है। अगर आप सर्टिफाई नहीं करोगे, प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, लिख लिख के, ठीक है ना। सो देयर इज अ रोल ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रीम ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम, सो यू आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमें जो टेस्टिंग करना होता है that includes various kind of raw materials, जिसमें प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, दवाई बनाने के लिए जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं, एपीआई जिसको हम बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें काफी सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं दवाई को बनाने के लिए, वो सबको बोलते हैं रॉ मटेरियल, इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल। काफी टाइम ऐसा भी देखा गया है कि दवाई क्लियर है, मतलब इट इज पासिंग द क्राइटेरिया, पर उसका पैकेजिंग मटेरियल वो प्रॉब्लमेटिक है, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, या उसकी जो सेल्फ लाइफ है, दवाई की सेल्फ लाइफ होती है ना, 2 साल 3 साल आप पढ़ते हो गए, भाई 2 साल अभी है सेल्फ लाइफ है ना भाई, अगर मेडिकल स्टोर से आप लेते हो तो अगर मान लीजिए उसका पैकेजिंग मटेरियल भी ठीक से क्वालिफाई नहीं किया गया है, तो भले ही लिखा हो 2 साल, और 1 साल में दवाई खराब हो सकती है, उसको भी क्वालिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। सिमिलर वे ऑफकोर्स द फिनिश प्रोडक्ट, जिसमें सभी टाइप्स के आप लोग हॉस्पिटल्स गए होंगे, अगर खुद के लिए कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स को जब एडमिट किया होता है, तो जितनी दवाई आप वहां देख रहे हो, फिर वो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटर्स हो, लार्ज वॉल्यूम हो, जो आईवी फ्लूइड से चढ़ता है, वो सब टाइप के प्रोडक्ट्स हो, फिर इंजेक्शन देते हैं, इंफ्यूज, वायर्स, ये सभी चीजों को प्रॉपरली माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस सेक्टर्स। प्लस इवन नॉन स्टेरल प्रोडक्ट्स जो डेली हम कोई ना कोई घर पे आपके घर में खाता ही होगा आज की तारीख में, आपके माताजी हो, पिताजी हो, या आपके फादर लाइक दादाजी या दादी जी हो, कोई ना कोई तो दवाई खाता ही होगा, लास्ट टू लास्ट कोई आयुर्वेदिक दवाई भी खाता होगा। तो आज की तारीख में आयुर्वेदिक दवा के भी स्टैंडर्ड्स है, उसको भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होके ही मार्केट में आना पड़ता है। मतलब यू एक्ट एज ए लाइक अ फिल्टर मीडियम, वो डिपेंड्स करता है फिल्टर मीडियम कितना बढ़िया है, आप कितने बढ़िया, समझ गए। तो अगर आप बढ़िया हो तो प्रोडक्ट बढ़िया आएगी मार्केट में, अगर आप में थोड़ी कमी रह गई, ढिलाई पोचाई हो गई, लूज हो गए कहीं पे, तो मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट आएगी, एंड वी वांट ऐसा ना हो, राइट। इसीलिए ये सब सेशंस का, ये सब टॉक्स का यही मतलब है, आप आपके लेवल को इतना बढ़ाओ कि यू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर, बिकॉज नाउअडेज फॉर द नेक्स्ट 2047 जो हमारा विजन है इंडिया का, we want to become, आज जो मैंने बोला कि we are third largest in terms of pharma, we want to become a first in the world। भले 3 से 1 आपको बहुत लगता है कि सब दूरी तो इतनी लंबी दिख नहीं रही बट जो गैप है वो बहुत बड़ा है। तो 3 से 1 आने में आप समझ लीजिए 25 साल की हमारी यात्रा होने वाली है, स्टार्ट होगी, और उसमें आप लोगों का भी इतना महत्वपूर्ण योगदान लगने वाला है, तो जो लगाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, सिंपल बात। सिमिलर वे जो मेडिकल डिवाइस है, तो कहीं ना कहीं हम हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, देखते भी हो, घर में भी अभी मेडिकल डिवाइस हर एक क्षेत्र में आ गया है। आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आप वो स्ट्रिप्स वगैरह यूज करते हो, राइट, ब्लड ग्लूकोज मेजर करने के लिए, वो सब आते हैं डिवाइस में, नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, या कुछ भी टाइप का, इवन सिंपलेस्ट अपना एडहेसिव टेप, आप बैंडेजेस लगा दो, थोड़ा कट हो गया, दिस ऑल आर द मेडिकल डिवाइस, वो सभी के लिए भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग इज नाउअडेज मस्ट, जो पहले नहीं था। इन 2017 अपने इंडिया में सबसे पहले ये एक आया, इसको बोलते हैं इंडियन मेडिकल डिवाइस रूल्स,
मेडिकल डिवाइस रूल्स फर्स्ट टाइम आया इन 2017, सो ऑलमोस्ट 6 साल जिसको हो चुके हैं। उसके बाद मेडिकल डिवाइस इज ऑल्सो हैविंग ए सेम इंपॉर्टेंस लाइक ड्रग्स एंड मेडिसिन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ओके, अभी आते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जहां आपको रोल प्ले करना है। आपके कॉलेज लेवल पे जो करिकुलम होगा, कुछ ना कुछ टेस्ट होते होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ योर एमएससी या बीएससी, बट आप बैक्टीरिया का कुछ कल्चर करते होंगे, कुछ का कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते होंगे, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, अलग अलग टाइप के आप जो टेस्ट करते हो। बट जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस की, तो उसमें हमें क्या टेस्ट करना है एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट? तो मुझे टेस्ट करना है, इफ आई एम वर्किंग एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन एनी फार्मा और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, तो सबसे पहले मुझे देखना है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। अगर मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, अगर ये पूरा कॉरिडोर या पूरा सेमिनार हॉल इफ इट्स माय मैन्युफैक्चरिंग एरिया, आई हैव टू सी कि एनवायरमेंट में कितने माइक्रोब्स हैं। क्या किसी को माइक्रोब्स दिख रहे हैं रूम में? नहीं दिख रहे है? सही? कितने होंगे? कितने होंगे? बोलो, आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो भाई, आई एम नॉट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कितने होंगे? अंदाजा तो लगाओ, कितने थाउजेंड्स में होंगे? तो थोड़ा लाउडली बोलो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का क्या डेफिनेशन हुआ? काउंट नहीं कर सकते, वो तो बराबर है। सो दैट मीन्स मे बी बिलियंस और बिलियंस। सो इन शॉर्ट, नो प्लेस इन द अर्थ इज डिवोइड ऑफ माइक्रोब्स। आर यू एग्री? यहाँ भी बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है, फिर भी हम बैठे हुए हैं। कल से तो आप बैठे हो, तो भी आए। ठीक है, बट एवरीबॉडी इज हेल्थी, राइट? तो microbes are not always, you can say, enemy of our human beings. Rather, many microbes are friendly also, right? अपने बॉडी पे भी इतने माइक्रोब्स है। अगर मैं बताऊं, अगर बॉडी में माइक्रोब्स ना हो ना, nobody can digest even single piece of roti. अगर माइक्रोब्स है तो रोटी को आप खा के डाइजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डाइजेस्ट इवन सिंपल प्लेन रोटी या दाल भात। तो माइक्रोब्स की वजह से हम कर सकते हैं। बट अगर आप ये फार्मा इंडस्ट्री की बात करो, तो यू मस्ट हैव टू नो कि एनवायरमेंट में कितने माइक्रोब्स हैं। उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। वो हमें करना होता है। अलग अलग प्लेट्स, आप कल्चर प्लेट बनाते हो आपके एमएससी के लैब्स में, उसको हमें एक्सपोज करना होता है डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट एरिया लोकेशंस पे। देन यू हैव टू सी कितने माइक्रोब्स हैं, क्योंकि वहां क्लीन रूम का कंसेप्ट है। वहां माइक्रोब्स जितने अभी यहाँ है इतने नहीं होना चाहिए। जो आपने बोला अनकाउंटेबल, इनडेफिनिट, नो, शुड हैव सर्टेन लिमिट। और उसके लिए काफी कंट्रोल्स भी होते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज में। जैसे यहाँ तो आपका सेंट्रल एसी है, यू हैव टू हैव एचवैक सिस्टम, जहाँ प्रेशर ही आती हो, कंट्रोल एयर आती हो, हेपा फिल्टर होके एयर अंदर आती हो। बट ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कितने माइक्रोब। सेकेंड आता है मीडिया प्रिपरेशन, थर्ड आता है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट बताया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्या उसमें हम करते हैं? दो चीज करते हैं, एक वायबल काउंट, नॉन वायबल काउंट, जिसमें हम बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड इन जनरल सबको काउंट करने की कोशिश करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेटअप्स बाय पुटिंग ए डिफरेंट कल्चर प्लेट्स। नॉन वायबल काउंट में हम पार्टिकल काउंट करते हैं। उसके लिए छोटा छोटा मशीन आते हैं या एयर सैम्पलिंग यूनिट्स आते हैं, जिससे हम एयर को सक करवाते हैं मशीन में, एंड देन वी डिटेक्ट कि कितने पार्टिकल्स काउंट। उसकी लिमिट्स रहती है हर एक की, और क्लासिफिकेशन होता है। क्लास बी इज द वर्स्ट क्लास, then class C, class B, class A, the top class. इसमें particle counts बहुत कम होते हैं, less than 100. And of course, the source of contamination for any environment is various things like air होगा, personal होगा, equipment, कहीं से भी microbes आ सकते हैं because it is very tiny. And of course, the method for this microbial monitoring, settle plate, air sampling and surface sampling. इससे हमें ये करना है। मीडिया प्रिपरेशन, आई थिंक आप लोग एमएससी में करते होंगे कहीं ना कहीं, तो इट इज द सेम फंडामेंटल थिंग आपको आना चाहिए जब अगर आप इंडस्ट्री में आते हो एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, ये सुना है कभी आप? क्या होता है? तो आपके
अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया या फंगाई या जो यीस्ट है उसको ग्रो कर सके। आप कल्चर मीडिया तो यूज करते ही होंगे, राइट? हाई मीडिया का होगा या कोई दूसरे सप्लायर्स का होगा। सो वेदर इट प्रमोट्स द डिजायर्ड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म और नॉट, वो हमें चेक करना होता है बाय डूइंग दिस जीपीटी टेस्ट, इसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो भी आपका जो रिजल्ट है वो आइदर फॉल्स नेगेटिव भी जाएगा या फॉल्स पॉजिटिव भी जाएगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको लगता है तो बहुत सिंपल चीज है, क्या इसमें रखा है? बट काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, फार्मा इंडस्ट्रीज में भी उनके ऑडिट्स होते हैं, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग ऑडिट होते हैं। इसमें अपनी इंडिया की ऑथोरिटी सीडीएस जो है, बट टफेस्ट रेगुलेटरीज यूएसएफडीए जो यूएस की है। और यूएसएफडीए का भी वही है कि दे आर वेरी क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग प्लांट्स में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में तो काफी डिपार्टमेंट होते हैं, और उसमें सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट किसी को गिनते हैं? आपके डिपार्टमेंट। यूएसएफडीए को मालूम है अगर जिसका माइक्रो क्लियर उसका सब क्लियर। अगर मान लीजिए आज से 5 साल बाद कहीं आप फार्मा इंडस्ट्री में होंगे तो यू आर द फर्स्ट पर्सन हु आर गोइंग टू फेस द टफेस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, यूएसएफडीए। वो आपके डिपार्टमेंट में पहले आएंगे, बाद में फिर क्यूसी में जाएंगे, बाद में क्यूए में जाएंगे, बाद में। स्टेरिलिटी टेस्ट, कोई भी प्रोडक्ट स्टेराइल है या नहीं है। कुछ प्रोडक्ट जो स्टेराइल होनी चाहिए उसमें देयर शुड बी जीरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको चेक करके योर स्टेरिलिटी टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स नहीं है बट पहले माइक्रोब्स थे, हमने कुछ प्रोसेस की, स्टेरिलाइजेशन किया, ऑटोक्लेव किया या गामा किया, वो हो चुका, बट जो उसके पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो अपना कुछ केमिकल छोड़ के चले गए, अपनी परछाई छोड़ के चले गए। तो परछाई कैसे डिटेक्ट की जाए? ये टेस्ट है जिसको बोलते हैं बीईटी टेस्ट, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। बैक्टीरिया के अंदर जो एंडोटॉक्सिन होता है पर्टिकुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर से, उसको भी इतना महत्वपूर्ण हमें डिटेक्ट करना होता है कोई भी फार्मास्यूटिकल स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है एमएलटी टेस्ट, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट स्टेरॉइड नहीं है, जैसे आप टेबलेट खाते हो, कैप्सूल खाते हो, दैट डजंट रिक्वायर टू बी स्टेरॉइड, जीरो माइक्रोब्स नहीं हो सकते उसमें, बट माइक्रोब्स जो भी हो वो लिमिट में हो। वो हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखना है। एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको भी देखना है कि आपके प्लांट्स में जो टेस्ट मतलब प्रोडक्ट्स बन रही है वो इसकी लिमिट में हो। उसमें 6 टाइप के बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं, TDC, TYMC, and of course 4 types of the pathogenic bacteria. नेक्स्ट है, अगर आपके यूनिट्स में कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अनआइडेंटिफाइड है, तो एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपको अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई करना है और उसकी एक लाइब्रेरी बनानी होती है। जैसे आप बुक्स की लाइब्रेरी बना दो, सिमिलर वे माइक्रोब्स के कल्चर की भी लाइब्रेरी होती है, wherein you have to identify and you have to keep that records कि बॉस मेरे एरिया में, मेरे फार्मास्यूटिकल या मेडिकल डिवाइस के सेटअप में इतने 10 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एंड आई एम डूइंग रेगुलर मैपिंग ऑफ दैट एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैं उनका मैपिंग कर रही हूँ, एंड इट शुड नॉट बी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। जैसे अगर आपका स्टेराइल यूनिट नहीं है तो जीरो नहीं हो सकते, बट आपको वो ध्यान में रखना है कि वो लिमिट से बाहर नहीं हो, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अलग अलग उसकी भी टेक्निक्स होती है, phenotyping, immunological, and of course the genetic techniques nowadays available. Then होता है antimicrobial susceptibility test। कोई भी प्रोडक्ट्स जो क्लेम हमें करना है एज एंटी माइक्रोबियल है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए, घर पे हम डेटॉल, सेवलॉन या फिनाइल यूज करते हैं राइट एज अ सरफेस क्लीनर, तो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें जो टेस्ट करनी होती है। आपके मैन्युफैक्चरिंग फार्मा इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां भी एरिया को मुझे क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, तो वो सब करने के लिए मुझे कोई ना कोई केमिकल यूज करना पड़ेगा। वो केमिकल प्रॉपरली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे जो टेस्ट करना है उसका नाम है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोग क्लेम करते थे कि मेरा माइक्रोब्स के सामने भी इफेक्टिव है, वायरस के सामने भी इफेक्टिव है, हमारा केमिकल यूज करो एंड यू आर फ्री फ्रॉम दिस कोविड। सो ऑफ कोर्स काफी लोग तो फॉल्स क्लेम कर रहे थे, बट काफी लोग जेन्युइन भी टेस्ट करके इसको क्वालिफाई करते। बायोबर्डन टेस्ट, जैसे काफी जो नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्ट है
उसके ऊपर अगर हमें चेक करना कि कितना बर्डन है माइक्रोब का, जैसे ये रूम का अगर मुझे चेक करना है व्हाट इज द बायो बर्डन इन दिस सेमिनार हॉल, द टेस्ट आई हैव टू डू इज दिस बायो बर्डन टेस्ट, कितना माइक्रोबियल लोड है ये पर्टिकुलर एरिया में। एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे तो चल जाएगा, बट अगर फार्मा इंडस्ट्री का यही सेटअप हो तो वहां पे मुझे लिमिट में रखना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या करना है, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आई हैव टू गिव द रिकमेंडेशन, सर यहाँ पे इतने सारे ज्यादा माइक्रोब्स, अभी मैंने जो कॉलोनी काउंट किया उसमें ज्यादा है, यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, यू इंक्रीज द क्लीनिंग ऑफ द HEPA फिल्टर्स लाइक दैट। तो आपका रोल स्ट्रेटेजिक डिसीजन में भी आता है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप सिर्फ टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सर्टिफाई नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे अपने आप को सोच सकते हो। ऑफकोर्स उसके लिए आपको काफी अनुभव लेना पड़ता है, 15 से 20 साल का। यू कैन एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर इन द फार्मा इंडस्ट्री, तो अपने आप को वहां भी आप सोचो। एंड ऑफ कोर्स मेथड वैलिडेशन, आप जो काम कर रहे हो आपके लैब में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो रिप्रोड्यूसिबल है, रिपीटेटिव रिजल्ट आ सकते हैं उसके कि नहीं, उसके लिए जो आपको करना है टू प्रूव द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, the test known as a method validation. So these are in broad, I can say these are the 10 different areas where you have to closely work. अगर आप 6 महीने 1 साल के बाद जब फार्मा या मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में अगर आपकी करियर बना रहे हो तो कौन कौन से इसके एक्ट एंड रूल्स है हमारे इंडिया में, तो these are nothing but the act and rules, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहले आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सेकेंड आता है इंडियन मेडिकल डिवाइस रूल, जैसे मैंने बताया 2017 में ही इंप्लीमेंट हुआ है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट आता है कॉस्मेटिक रूल, कॉस्मेटिक्स को हमने अलग कर दिया है ड्रग्स एंड फार्मा से, उसका रूल है 2020 में। एंड लेटेस्ट वन इज 1940 का हमारा एक्ट था, वो एक्ट को पूरा रिवाइज करने की कोशिश की जा रही है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। द बिल हैज बीन पास फ्रॉम द लोकसभा, बट राज्यसभा में अभी बिल पेंडिंग है। उसका नाम है न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइस कॉस्मेटिक बिल। तो इसमें काफी चेंजेस है, मतलब करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड को मद्देनजर रखते हुए काफी चेंजेस इसमें सुधार किए गए, क्योंकि वो एक्ट था 1940 का था, वेरी ओल्ड है। ऑफ कोर्स रिवीजन काफी आते रहे उसमें पीरियडिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट दिस इज द लेटेस्ट वन। कौन कौन सी मेथड हमें फॉलो करनी होती है, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ वेरियस मेथड्स। एटलीस्ट भले आपको इसका डीप डाइव ना हो, बट एटलीस्ट आपने सिर्फ नाम सुना हो और आप जब इंटरव्यू फेस करो तब एटलीस्ट आप बोल सको, उसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ समराइज किया है। फॉर एग्जाम्पल ये दो कैटेगरी है, दो कॉलम्स है, दिस फॉर फार्मा, दिस फॉर मेडिकल डिवाइस, एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ टेस्ट बायोबर्डन टेस्ट। तो उसके लिए जो मेथड आती है अलग अलग, ये IPPP लिखा है। सो दीज आर द फार्माकोपिया पब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव कंट्रीज रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो वी हैव IP इंडियन फार्माकोपिया, देन BP ब्रिटिश फार्माकोपिया यूके के लिए, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, JP क्या होगा EP यूरोप, यूरोप और ब्रिटिश यू नो ब्रेक्सिट, इसलिए दोनों अलग अलग उनके चल रहे हैं। तो EP भी है और BP भी है अवेलेबल। तो फार्मा के लिए ये दीज आर द वेरियस स्टैंडर्ड्स व्हिच यू हैव टू सी, कि आपको ये बायोबर्डन करना है, MLT करना है, CLT करना है या BT करना है। एंड मेडिकल डिवाइस की बात करें, वी हैव इंटरनेशनली हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स, जिसको बोलते हैं ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिश करता है गाइडलाइंस को। इसमें अलग अलग उसके पार्ट्स है, नंबर्स है, तो 1 2 3 1 1 7 3 7। सिर्फ आप इसको कभी भी दिमाग में बिठा लेना, इंटरव्यूज में अगर आप जब जाते हो हमारे जैसे इंडस्ट्री, तो ये पूछते भाई आपको एटलीस्ट बेसिक IP का फुल फॉर्म आना चाहिए, BP का फुल फॉर्म आना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड कोरिलेट उसमें क्या लिखा है, अगर आप जान के पढ़ के आ जाओ तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। बिकॉज वी डोंट वांट योर थियरिटिकल नॉलेज, बट वी वुड लाइक टू सी कि आप कोई प्रैक्टिकल जो हम इंडस्ट्री में डे टू डे यूज कर रहे हैं उसके लिए भी आप अवेयर हो। Next is aseptic process for microbiological testing, a learning for a good microbiologist. अगर आपको एक अच्छा माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, what you have to do? So basically, as a good microbiologist, ऐसा सिर्फ आपका रोल सिर्फ टेस्टिंग का नहीं है, but it is very broad. और 4 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है for aseptic
मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फैसिलिटी डिजाइन एंड एचवर एंड प्रोसेस सिमुलेशन। अगर आप कोई फार्मा इंडस्ट्रीज में जब जाओगे, पर्टिकुलरली इन माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन, दिस इज द वे हाउ वी एंटर इन द लैब। क्योंकि जैसे आपने अभी सबने कन्विंस किया, सबने एक्सेप्ट भी किया कि यहाँ रूम, ये रूम में भी बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है, राइट? हमारे बॉडी के ऊपर भी बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, वी आर नॉट डिवोइड ऑफ माइक्रोब्स, उसके साथ ही हम जी रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं सीधा ही चला जाऊंगा, सिर्फ प्रॉपर एप्रॉन पहन के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो क्या होगा? आई मे कैरी बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स विथ मी, विच गिव मी अ वेरी रॉन्ग रिजल्ट। तो इसके लिए पूरा ही स्टरल गाउनिंग होता है, कंप्लीट बॉडी गाउनिंग जिसको हम बोलते हैं। So that is how we can minimize the personal level of chances of, you can say, contamination. Of course, various level के various systems हमें क्रिएट करने होते हैं, हम करते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज में, कि जहाँ पे एक रूम में से मतलब आपको एंटर भी होना है, यू कैन नॉट डायरेक्टली एंटर टू द योर मेन टेस्टिंग रूम डायरेक्टली। 3 अलग अलग एयरवॉक सिस्टम से एंटर होना होता है, फिर आप आपके मेन एरिया जहां आप टेस्टिंग करते हो, जो लैब्स में, वहां पे आप एंटर होते हो आफ्टर दिस फुल गाउनिंग। उसके बाद में जब आपको रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न का भी डोर अलग होता है, फिर आप जाके एग्जिट हो। मतलब जो बर्डन लेके आप अंदर जा रहे हो वो मिनिमाइज हो, अंदर आप टेस्टिंग करो। अंदर टेस्टिंग भी आपको क्या करना है? माइक्रोब्स का ही करना है। तो वो माइक्रोब्स कोई दूसरे भाई साहब जो लैब में आ रहे हैं उसके साथ क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, तो एग्जिट डोर भी अलग होता है। बाय दीज वेज यू कैन इमेजिन, सबसे अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई भी फार्मा कंपनी को होता है डेवलपमेंट का, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। आप सबसे कॉस्टलीस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट यू पीपल आर गोइंग टू डू। प्लीज अंडरस्टैंड, ये अलग अलग हाउ वी हैव टू मैनेज जब हम अंदर जाते हैं। पर्सनल हाइजीन, अगर आप जो भी आपके माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में आप स्पेचुला यूज करते होंगे कल्चर मीडिया को लेने के लिए, ये उसका ही स्कैनिंग यूनिट और माइक्रोस्कोपी फोटोग्राफ है। हमें लगता है कि तो स्किल की है, एकदम क्लियर है, शाइनिंग कर रही है, नहीं है, बट दीज आर यू कैन से अगेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स आर लाइंग एज अ पावर फिल्म ऑन, जो दिखे नहीं जा सकते। मतलब आप जो जिससे टेस्ट करके आपका ले रहे हो वो भी कंटामिनेशन क्रिएट हो सकता है। ऑफ कोर्स इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डूइंग ऑटोक्लेव एंड एवरीथिंग, बट पॉइंट इज आपको जो भी दिख नहीं रहा है, इसलिए यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली। माइक्रोब्स हमसे भी स्मार्ट हो सकते हैं, तो प्रूव हुआ कोविड। Okay, surfaces. So these are the how the clean room look like. This is the class how 10,000 clean room. अगर ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो मेरा 10,000 का ऐसा उसका सेटअप होगा। जब एग्जैक्टली मैं अंदर जाऊंगा जब टेस्ट करने के लिए, so this is my class 100 clean room. इसमें आप देख रहे हो पूरा गाउनिंग करके पूरा कंट्रोल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आपको रेडी रहना है पूरा काम करने। कभी पैराशूट पेड़ के ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, because you are not an astronaut, but you are nothing lesser than the astronaut, at least I can say. ठीक है ना? वो शूट पहनने को मिलेगा if you deserve for it and if you work very hard. ये अलग अलग आयाम है, इसको मैं स्किप करूंगा। एयर सिस्टम्स, this is the way how different companies have done a setup for various kind of airflow. Vertical होता है, horizontal होता है, turbulent होता है। As I said, air blocks, अगर आपको अंदर भी एंटर होना तो there is no single road, जैसे सीधा आप यहाँ गए, no, 3 doors again in across directions to get entry, then main area, then exit के लिए अलग door। उसका प्रेशर, of course very important is pressure। हम पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं जैसे अंदर contamination ना आ जाए। This is how it looks like। HEPA filters, which is again important part for all this operation। इसको बोलते हैं GC, गुड क्लीन रूम प्रैक्टिसेस, GCRP। सीधा ही थोड़ा स्किप करूंगा लिमिटेशन ऑफ टाइम, बट जो इसके की एट्रीब्यूट्स है, यस, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है वो जब आओगे तो हम सिखा देंगे।
बट क्या नहीं करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तो करना ही मत भाई। आपके प्रोफेसर आपको बोलते हैं ना भाई सेमिनार चल रहा है तो भाई ये तो मत ही करना, आप सुनो या ना सुनो वो अलग बात है। पर ये तो मत करना, इनडिसिप्लिन मत करना, राइट। तो ये वही स्टेप है। इनडिसिप्लिन क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के अंदर में, तो आपको ध्यान में रखनी और नहीं कर रही है। डोंट कफ और स्नीज इन द क्लीन रूम। अगर आप बीमार हो, थोड़े आपका फीवर कफ या ऐसा कुछ भी है तो सिंपली से टू योर रिपोर्टिंग मैनेजर, सर आज मेरी कंडीशंस ठीक है, आई विल नॉट एंटर। आपको फोर्स भी कोई भी नहीं करेगा वहां पे इंडस्ट्री में। यू हैव टू टेक कंप्लीटली, यू कैन से फ्रेश अप योरसेल्फ, उसके बाद आप एंटर करो, क्योंकि आपकी एक छिप स्नीज हो सकता है कि करीबन 10 करोड़ की हो। डायलॉग है ना, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या जानो रमेश बाबू। तो यहाँ पे वो माहौल है। अगर आप एक छींक की डालोगे हो सकता है कि वो 10 करोड़ की पूरी फॉर्मुलेशन की बैच बनी हो जो आपके यहाँ पड़ी हो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, और आपको छींक आ गई, खा लिया आपने, कंट्रोल नहीं कर पाए किसी भी तरह, और या थोड़ा एरिया से दूर नहीं जा पाए, हो सकता है कि प्रोडक्ट आपने फेल डिक्लेयर कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा 10 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, आप बोलोगे सर फेल है, सॉरी आई कैन नॉट सर्टिफाई योर प्रोडक्ट। तो समझ गए ना, एक छिप 10 करोड़। ऑफ कोर्स बाकी सारे भी पॉइंट्स है कि डोंट मूव विद द ब्रिस्क एब्रप्ट मूवमेंट, मतलब एकदम क्लीन रूम एनवायरनमेंट बोले एज आई सेड, आपको मैं एस्ट्रोनॉट इसलिए कहा कि जहां भी पूरी डिसिप्लिन होनी चाहिए, कैन नॉट मूव हियर एंड देयर, अदरवाइज फिर वापस नहीं आओगे। सिंपल। आप बोलो चलो अभी थोड़ा मैं बाहर निकल जाऊं, ऐसा ऐसा कर लो, तो निकल तो जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे, फिर जीरो क्रेडिट। तो यहाँ भी ऐसा माहौल है। यहाँ आपको पूरा ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट टच द वॉल, यू शुड नॉट टच द वेरियस कॉर्नर्स, nooks एंड कॉर्नर्स, यू हैव टू डू द वेरी प्रिसाइज वर्क। कोई गारमेंट्स, कोई आर्टिफिशियल या कोई भी गोल्ड ज्वेलरीज, नथिंग यू हैव टू वियर, यू हैव टू जस्ट रिमूव ऑल योर, इवन वॉच, कुछ भी नहीं हम अलाउ करते वहां पे, बिकॉज ऑल आर दिस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, वी नेवर नो माइक्रोब्स कहां से आ रहे हैं। आप बोलोगे सर ये तो पूरा क्लीन है, नीट है, नो सॉरी, नथिंग इज देयर, इवन विथ दिस नॉट। तो आपको ये रेडी रहना है, भले मतलब ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम ओनली, देन आफ्टर बाहर आ जाओ, डी गाउनिंग कर लो, अगेन यू कैन वियर एंड यू कैन डू योर डॉक्यूमेंटेशन वर्क। जब आप क्लीन रूम में हो, यू मस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर कि कुछ भी बॉडी का कोई भी पार्ट एक्सपोज ना हो, सेकेंडली बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसी वियरेबल चीज ना हो आपके साथ। ऑफ कोर्स मोबाइल तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो अलाउ नहीं करते कोई इंडस्ट्री। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने इतना अच्छा अच्छा बोल दिया, हमें चांद तारे दिखा दिए, एस्ट्रोनॉट हमने हमें बना दिया, तो एग्जैक्टली अभी क्या होगा हमारे करियर में, क्या हमारे स्टार्टिंग में मिल सकता है, व्हाट विल वेयर आर द करियर अपॉर्चुनिटी लाइक्स, राइट। तो स्वाभाविक सवाल है आपके दिमाग में होना चाहिए, मुझे कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एज अ रेगुलेटरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो दीज आर द वेरियस इंडस्ट्रीज जो आपको लेने के लिए तैयार होगी। ऑफ कोर्स एज आई सेड, हम स्किल सेट देखते हैं, आपका सिर्फ नॉलेज नहीं बट आपका स्किल, एट्रीब्यूट्स और आपका एटीट्यूड। काफी टाइम आपके क्रेडेंशियल अच्छे हो सकते हैं, बट अगर आपका एटीट्यूड नहीं है, आज आपको मालूम है कि आज कोई भी इंडस्ट्रीज में HR इज ऑल्सो कंडक्टिंग द वेरियस राउंड्स ऑफ इंटरव्यू विद हेल्प ऑफ AI टेक्नोलॉजी। हम लोग भी AI टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप बोलोगे कुछ भी, सही बोलोगे सही जवाब, लेकिन जस्ट लाइक लाइट डिटेक्टर मालूम पड़ जाएगा कि कितना स्टफ है आपके रियल में। सो बी वेरी क्लियर, बी वेरी ट्रांसपेरेंट व्हेन यू आर अपियरिंग इन एनी इंटरव्यू। अगर आपको आगे बढ़ना है, कभी भी हाइड एंड स्टिक्स विल नॉट गिव यू अ लॉन्ग लास्टिंग करियर। जो आपके आता है या जो आपके अंदर है वही आप दिखावा करो, दूसरा दिखावा करोगे तो तुरंत पकड़ में आ जाओगे और इंडस्ट्री आपको चांस नहीं देगी। इसलिए काफी टाइम्स आपके सीनियर से सुना फ्रेशर्स को नहीं अडॉप्ट कर रहे इजीली, बिकॉज दीज आर द की एट्रीब्यूट्स। और मैं आपके प्रोफेसर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए सेपरेट सेशन करते ही होंगे वो, ऑफ कोर्स, टू मेंटर यू
and to guide you, which are the various other attributes apart from your knowledge and skills and teaching. These are the personality related attributes, जो भी बहुत important है industry. जैसे से अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहे तो क्या होगा, 10 करोड़ मेरा जहर चले जाएंगे. तो वो मैं आपको वहां नहीं सिखाऊंगा, वो आपके टीचर्स को सिखाना पड़ेगा ये सब डिसिप्लिन वाली चीज. ओके, सो दीज आर द वेरियस ऑप्शन. फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा या उनकी जो टेस्टिंग, हर एक फार्मा कंपनी में इज मस्ट टू हैव अ माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब आल्सो. मेडिकल डिवाइस में भी सेम है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका रोल है, इवन जब उनकी टेस्टिंग लैब होती है उसमें भी आपका रोल है. फिर एफडीसी सीडीएस अप्रूव टेस्टिंग लैब, हमारा जैसी जो टेस्टिंग लैब है जो सबके लिए काम करती है, वहां भी आपका रोल है. सीडीपीएल सीडीएस, दीज आर द गवर्नमेंट लैब्स, गवर्नमेंट की खुद की लैब्स है, वहां भी आपका रोल है. वी आर ऑल्सो सीआरओ, हमारे जैसे सीआरओ में आपका रोल है. ऑलमोस्ट देयर आर वेरियस सेक्टर्स एंड एज आई सेड कि जो ग्रोथ रेट है और गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है टू मेक इंडिया नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस, तो आप समझ सकते हैं कि ये सेक्टर्स इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. और काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है इंडस्ट्री को पुश करने के लिए. पीएलआई स्कीम जो हमारे मनसुख मांडविया साहब लोग लाए हैं, करीबन 1 लाख करोड़ ये इंडस्ट्रीज को दिए जा रहे हैं एज अ सपोर्टिंग. भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ एज अ गवर्नमेंट. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कितने भी ऑटोमेशन या रोबोटिक्स आ जाए, but without certain technical knowledge we cannot work. We have to have certain kind of, you can say, knowledgeable resources like you people. Of course starting package आपको यहाँ से start करना होता है 1.5 maybe up to 3 lakhs depending upon the industry, depending upon the role and of course the depending upon your skill set. आपको starting package पर annum का ये मिल सकता है अच्छी इंडस्ट्रीज में, जैसे एमएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो आप. So finally, in summary, last 40 minutes what we have seen so far, regulatory microbiology testing is very important, very crucial. आप लोगों का रोल है फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में और उसको नंबर 1 बनाने के लिए वर्ल्ड का. एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग्स आर रिक्वायर्ड, जो हमने देखा अलग अलग 10 टाइप्स के. वी हैव टू फॉलो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, इसमें मैंने क्या करना है वो नहीं बताया, बट क्या नहीं करना है उसके ऊपर मैंने एम्फसाइज किया आपको. एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल अक्रॉस द स्टेट. गुजरात की बात करें तो वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस. पूरे इंडिया का 40% दवाई गुजरात से बनती है. 40% मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस बोथ आर फ्रॉम गुजरात. तो गुजरात में क्या सी फाड़ो सिंहा पर कई शकाय खाली सी नहीं, सिंहा पर એટલી બધી આગળ વધી રહી છે. બેઝિકલી અમારી કંપની ની શરૂઆત મેડમ ને ખબર છે કે મારી બેટર હાફ એટલે મારા મિસિસ से ચાલુ કર્યું. which was started with our only 2 students in 2012. આજે અમારી સાથે 200 લોકો જોડાયેલા. So of course with teamwork only this can be possible. Thank you. Views over there. So lastly, as I said, seminar में खाली seminar ही जब पूरा करी certificates मળી ગયું એનાથી લિમિટ ના રાખતા. Just have a very big dreams for your own career. તમારી career dream તમને જ આવવું જોઈએ, બાજુવાળા નહીં આ. આવશે તો પછી એના તમે એને અચીવ નહીં કરી શકો, કારણ ડ્રીમ કોક બીજા જોયું છે તમારા વિશે. So you have to dream about your own career કે મારે ક્યાં જવું છે, મારે શું કરવું છે. એની થોડીક મેં તમને ખાલી ગ્લિમ્સીસ આપવાની કોશિશ કરી છે. બટ ફિલ્ડ ઇઝ સો વાસ્ટ, બધા પાસે તમારા હાથમાં, વર્લ્ડ તમારા હાથમાં છે ને. અને એના ઝુકરબર્ગ સુધી લિમિટ ના રાખે, ફેસબુક વોટ્સએપ સુધી લિમિટ ના રાખે, પણ એનાથી પણ બિયોન્ડ એનો યુઝ કરશો, you can increase your skills. Thank you. One common man question, sir. Yes, sir. It is not related with microbiology. No, sir. Doctor prescribed 50 ml paracetamol for my daughter. Hmm. And उसमें लिखा था कि 5 ml 6 बार, तो 30 ml पाइप ऑफ हो गया. Hmm. 20 ml जो बचा है तो उसकी लिमिट उस पर लिखी थी एक्सपायर डेट 2025.
तो रियली वो 2025 उस टाइम कंसिडर करना होता है कि नहीं होता है? ओके, गुड क्वेश्चन। तो उस पर डिपेंड्स करता है कि आपका जो फॉर्मुलेशन है उसमें दो टाइप के होते हैं, स्टेराइल फॉर्मुलेशन एंड नॉन स्टेराइल फॉर्मुलेशन। अगर वो सिरप है, नॉन स्टेराइल है, तो उसके ऊपर जो लिखा गया है दैट इज अ वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ। बट अगर वो स्टेराइल प्रोडक्ट, लाइक पैरासीटामोल का आपने एग्जांपल लिया, अगर वो इंजेक्शन भी आता है, आपने लिया होगा शायद, घर पे लिया होगा तो सिरप होगा, सिरप या सस्पेंशन आता है उसका, अलग अलग फ्लेवर वाला है, तो उसकी सेल्फ लाइफ वी कैन कंसीडर अप टू द लास्ट पीरियड। One more question as a microbiologist. Sir, many times we saw that it was mentioned by our some students that they are initially followed US FDA plus combination of IP, Indian pharmacopoeia for particular. Is it really possible, sir, in industry? Means for particular aspect of production, I am using the IP. And later on for the testing, I am using the BP or USP. Is it that combination is allowed as per regulation concern? Yes. So जहां तक रेगुलेशंस की बात है, पर्टिकुलर अगर आपके माइक्रोलॉजिकल टेस्टिंग्स की बात करें, तो मोर और लेस इंडियन फार्माकोपिया हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो, यूनाइटेड फार्माकोपिया हो, दे आर ऑलमोस्ट हार्मोनाइज्ड। उसमें जितने भी टेस्ट के मेथड या पैरामीटर्स है ऑलमोस्ट हार्मोनाइज्ड। डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस लिमिट्स काफी जगह पे, मतलब हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट्स वो सब में ऑलमोस्ट कॉमन, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लिमिट्स में चेंज है, तो वो आपको देखना है कि जो स्ट्रिंजेस्ट है, मतलब जो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलेशन, अगर आप उसको कंप्लाई करते हो तो बाकी के ऑटोमेटिक हो जाए। Thank you so much, sir. Yes. Manish, sir, I have a question. First of all, it was a wonderful presentation, and thank you so much for giving us a tour to that clean room and that industry. Probably we all have enjoyed that. So thank you for that. I have a question on behalf of all these young minds, because I have been witness your journey of acuprexins to 2012 or 2011 almost. So I know how you have established that. So ગુજરાતમાં કહેવાય છે ને કે બધા બિઝનેસમેન વધારે હોય અને ધંધો જલ્દી વિચારી લે. તો આ બધા છોકરાઓ માટે કદાચ એમને કોઈ નાનકડું સેટઅપ ઊભું કરવું હોય, they want to go for either pharmaceutical product, basic products, or maybe any medical devices related startup they want to do. Can they have certain opportunity in that case? 100%. Why not, madam? Because as Madam rightly said, she is witnessing us since last almost more than decade. And मैडम ने खुद ने भी काफी हमारा जो when I was in academia before this industry, I was affiliated with the GTU as the head of pharmacy. तो मैडम भी काफी जगह पे हमारा जो IPR का या innovations के programs होते रहते थे, वहाँ पे आते थे। As you know, nowadays the concept of incubation, I think आपकी यूनिवर्सिटीज में incubation centers होगा ही। तो अगर आप उसका leverage करके इनिशियली मे बी, अगर सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट अगर आप नहीं करते, बट ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स आप आइडेंटिफाई करो, पर्टिकुलर अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आप कर सकते हो। सो एज आई सेड, नाउअडेज फार्मा इंडस्ट्री या मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में विच इज द बिगेस्ट चैलेंज, द बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ टू यू कैन से कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ क्लीन रूम एनवायरनमेंट। उसके लिए आप क्या इंटरवेंशन कर सकते हो? उसके लिए आप कर सकते हो कि भाई अगर आपकी जैसे यूनिवर्सिटीज आपको थोड़ा सपोर्ट करती है, यू डेवलप अ सर्टेन काइंड ऑफ न्यू नोवेल डिसइंफेक्टेंट। सिंपल सी चीज है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन आप बनाइए कि जिससे हम जो माइक्रोब्स को मैक्सिमम 99.999% तक उसको किल करता है। मल्टीपल टाइप ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, सुडोमोनास और बाकी सब यीस्ट, मोल्ड, सभी टाइप्स के आ जाए, ऐसा आप कुछ सोच सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, फार्मा में थोड़ा अगर आपको काम करना है, डिवाइस में काम करना है, तो यूजुअली सभी फेस किया कि कट हो गया, वाउंड हो गया, इंजरी हो गई, तो हाउ टू हैंडल इट। आप कोई ऐसा एंटी माइक्रोबियल बैंडेजेस जो काफी आती भी है मार्केट में, बट हैव सम सर्टेन इनोवेशंस। अभी ड्यूरिंग कोविड काफी लोग एंटी माइक्रोबियल मास्क लेके आए थे मार्केट में, और किसी भाई साहब ने तो बहुत अच्छा, मैंने जब अहमदाबाद में था तो आई हैव सीन वन मास्क, कर्क्यूमिन मास्क, पूरा कर्क्यूमिन, मतलब हल्दी होती है ना, हल्दी वाला मास्क, वो लिखा था 100% कोविड फ्री।
वो कितना उसने टेस्ट किया नहीं किया मालूम है, 50 रुपये उसकी प्राइस थी। बट देयर इज अ जोक पार्ट, एंड ऑफ कोर्स वो तो मार्केटिंग टूल था उनका कि भाई करक्यूमिन का कलर डाल के बोल दिया कि भाई इट इज एक्टिंग अगेंस्ट कोविड। बट यस, यू कैन थिंक इन मल्टीपल वे कि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, आपको टेस्टिंग्स में नहीं आना है, आपको इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है, तो देयर आर वेरियस वेज। और आज की तारीख में देखा जाए तो हमारे पास तो काफी स्टार्टअप भी आते हैं टेस्टिंग्स करवाने के लिए। तो उसमें हमने देखा गया है मेजर थिंग्स विच दे आर ट्राइंग टू डेवलप इज फॉर अवर इंडियन आर्मीज एंड इंडियन सोल्जर्स, जिसमें पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी या सोल्जर्स को क्या चाहिए कि अगर मुझे कोई कट या इंजरी हो गई, आई एम इन अ रिमोट प्लेस, मैं हिमालय की पहाड़ी पे हूँ या तिब्बत में कहीं अपनी जवाबदारी निभा रहा हूँ और वहां पे कहीं फाइटिंग्स में इंजरी मुझे हो गई, तो क्या होगा? मेरा बेस कैंप तो 50 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में मुझे 5 घंटे लग जाएंगे। हाउ आई हैव टू मैनेज माई इंजरी? So there is a biggest challenge, and government is the department of this government. There is no the DRDO, defense का जो department. They are investing like anything, and they are also encouraging the young birds like you people कि आप कुछ ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि सोल्जर्स जैसे इजीली उसको लगा पाए, आइदर पाउडर फॉर्म में हो, पैच फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्मुलेशन आप डेवलप करो। It should possess two activities. One, it should stop the bleeding because there is a first and foremost my requirement if I'm almost in my topmost of my area. And second, which also possess antimicrobial property. तो जब तक मैं बेस कैंप ना पहुंच पाऊँ और मुझे दूसरी केयर नहीं मिलती, एज अ फर्स्ट एड, एज अ प्राइमरी केयर, आई शुड हैव समथिंग। तो आप सोचो कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और काफी स्टार्टअप हमारे पास ऑलरेडी इसका टेस्टिंग करवा भी है। इंडिया मतलब अहमदाबाद के भी है, राजस्थान के भी है, कुछ चेन्नई के भी स्टार्टअप से हमारा डिस्कशन हो रहा है। तो दे आर ऑल्सो willing to continue certain various kind of testings with you because it is required vigorous testings, क्योंकि ये products ultimately कहाँ जाएगी? वहां पे जानी है, वहां पे क्वालिफाई होना। You can think in this directions. Yeah, awesome. Thank you, sir. Please be comfortable. So, my question is like in regulatory, sir. Hmm. सर, हम जैसे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, Hmm. स्टार्टअप जब एक प्रोडक्ट बनाता है ना, Hmm. तो पता ही नहीं चलता कि कौन से रेगुलेटेड फिट होगी। Right. We are going to the agents, Yeah. like in consultant. Yeah. तो 3 अलग-अलग कंसल्टेंट के पास जाते हैं, सबके पास से अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आती Right. है। एंड डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल वी आर स्टेट तो गांधीनगर में करते हैं, तो गांधीनगर दे आर नॉट रेडी टू गिव एनी आंसर। सो इन दैट केस Hmm. व्हाट इज आइडियल? Yes. So इसमें दो चीज कर सकते हैं कि नंबर वन, आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि अहमदाबाद के कुछ अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स आई हब है, मैडम इज नॉन टू मिस्टर हिरन नायर। तो वहां पे उन्होंने एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई है कि दे ब्रिंग वेरियस एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्टाइज ऑन अ कॉमन फोरम। तो वहां पे आप उनको अप्रोच करो कि भाई मुझे इस तरह का मार्गदर्शन चाहिए, फिर वो सीडीएससी हो, एफडीसीए हो, या जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवा रहे हैं, आप उनसे ही सीधा समझो ना, कंसल्टेंट तो आपको एक्सवाइजेड बताएगा। दैट इज व्हाट सर, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स जो होते हैं वो आईटी में होती है, या तो वहां पे बड़ा क्वेश्चन आता है। एग्जैक्टली। सो बेस्ट वे कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को अप्रोच करो। हो सकता है कि अभी इतना अभिगम चेंज नहीं हुआ है, बट यू कैन यूज दिस अदर सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ यू कैन से मोडालिटी, थ्रू दैट यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ फोरम। और सीडीएस खुद तो काफी टाइम पब्लिश करता है कि अगर उनको इस टाइप के फोरम्स स्टार्टअप्स के लिए है, तो वो दिल्ली में होता है, काफी टाइम ऑनलाइन भी होता है। बट रादर टू गो अप टू दिल्ली, local level also you can have a leverage through iHub and many other kind of you can say institutions who have a very good rapport with all this ecosystem, और वहां के माध्यम से आप हमारे पास भी आओगे, हम आपको फ्री में गाइडेंस देंगे। एज अ पर्सनल लेवल आई कैन गाइड टू एनी स्टूडेंट, मैं देता भी हूँ, दैट इज आई लव बेसिकली। थैंक यू सर। मैं उसमें थोड़ा ऐड कर सकती हूँ into that. iHub has already started many initiatives. Out of them, one they have gathered like the Saurashtra Kutch, and for that specifically life sciences, they have a association of it, and they would like to gather all of the academicians, all of the industry people who are working in the field of the life sciences. So like iHub is also giving a wonderful support, just like that our SIP support is also there for them. So they have all clusters and they are working on that. सो आपका रास्ता भी खुल गया।
Yes student, yeah, that's good. चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो स्टूडेंट मुझे पूछे कि सुन रहे हैं तो मुझे 45 मिनट्स आगे आ गई ऐसा। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है, मतलब रिलेटेड ही है कोई फार्मा बात इंडस्ट्री से। कोई बात सर काफी सारे जॉब एडवर्टाइजमेंट जो होती है कंपनीज की, नहीं। हमारे सर ने ग्रुप बनाया है, उसमें हमें मिलती रहती है। राइट। मेरा क्वेश्चन यही है सर कि जिस भी कंपनी में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे उन सब डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। राइट। तो मेरा क्वेश्चन यही है सर कि वो जो क्राइटेरिया है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे पास जो स्किल्स है, मतलब हम मुझे पता है कि मुझे यही कंपनी में जॉब करनी है, अगर मैं वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए और कोई ऑप्शन होना चाहिए या नहीं? मतलब मुझे यही इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे यही जॉब चाहिए, तो मुझे वो क्राइटेरिया फुलफिल, सपोज कि मेरे 12th के मार्क्स अगर कम हो रहे हैं तो मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ फॉर पर्टिकुलर क्राइटेरिया, तो मुझे क्या करना चाहिए जॉब मेरे लिए, जॉब के इंटरव्यू अप्लाई करने के लिए सर? ठीक, मैं समझ। थैंक यू। सिट डाउन। देखो इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स नो डाउट मान्य करते हैं, बट इतना भी महत्वपूर्ण वो नहीं है कि आपने 12th में कितने परसेंटेज लेके पास किया, या MSc में कितने CGPA, जो भी आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है, या MSc में जो भी ग्रेडिंग सिस्टम वो लेके आप हमारे पास। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका लॉजिकल रीजनिंग स्किल एज वेल एज योर एज ए एटीट्यूड, वो आपका कैसा है। तो कोई भी यूजुअली एक वो तो क्या होता है कि जैसे अभी 100 लोग ने हमें अप्लाई किया, तो अब हमारे HR को 100 को एक साथ बुला नहीं पाएंगे। सो उसके फिल्टर्स के लिए कहीं ना कहीं हम एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को देखते हैं कि भाई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के क्या है, तो जो भी टॉप 20 में आएगा, मान लीजिए मुझे 10 लोग लेने हैं, तो HR क्या करेगा, टॉप 20 को उसमें से सिलेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स उसमें इसलिए तो आपको मेहनत करनी है कि आप आपका CGPA है, जो भी आपका ग्रेडिंग है, वो इतना तो लाओ कि एटलीस्ट आपको एक चांस मिले सामने HR या टेक्निकल इंटरव्यूज में बैठने। एक बार अगर आप वो करेक्ट बैठने का चांस मिल गया, अगर आपको हॉट सीट मिल गई, फिर आपके वो हॉट सीट के लिए ये सब एकेडमिक्स एक्टिविटीज है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आप वो एटलीस्ट वहां तक पहुंच पाओ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी सारे होते हैं जो अप्लाई करते हैं, सबको तो चांस नहीं दे पाते, एक्सेप्ट काफी लोग कैंपस इंटरव्यूज करते हैं तो बात अलग है, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट तो सबको एक्सेप्ट बुलाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा एकेडमिक्स में ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज माय नंबर 1 सजेशन। एक बार अगर आप साथ साथ सामने बैठ गए किसी इंटरव्यूज करने, इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे जॉब लेनी है, तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे करते हो आप लोग, अगले 6 महीने तैयारी की या 9 की, और पिछले 24 घंटे में तो दिन रात, हाँ, विदाउट एनी स्लीपिंग। स्लीपिंग कोई भी पिल्स भी नहीं चाहिए कि मुझे जगना है। हाँ, चाय के 3 डोज हो जाएंगे, बट वो करके भी आप जाग के भी एग्जाम अच्छी तरह कर देते हो। तो इस तरह इंटरव्यूज को भी सीरियसली लेके आओ, क्योंकि काफी टाइम्स हमने देखा भी है, आजकल की जो जनरेशन है, सबका मैं नहीं बोल सकता, बट when they are appearing in the interview, when they give the chance, they are little bit casual, और उसको मालूम नहीं है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो मेरा आपको जो बोलने का ये सेशन का वही मकसद था कि अगर आपको इंडस्ट्री में आना है, यू शुड नो कि आपका रोल क्या है। क्योंकि वहां आपको इंटरव्यू यही पूछेगा, भाई तुम आगे क्या करोगे, यू डू नो कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज की आपको ले रहे हैं। अपने पोस्ट तो पढ़ लिया, MSc माइक्रोबायोलॉजी इज रिक्वायर्ड, आप पहुंच भी गए, आप आपके बारे में बोल दोगे, बट उसको क्या चाहिए उसके बारे में आपने सोचने की कोशिश की। सो उसके लिए पूरी तैयारी करो। वो इंडस्ट्रीज का अभी तो आपके जैसे वर्ल्ड आपके हाथ में है, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके बाकी सब सोर्सेज देख लो, क्यों ये पोस्ट डाली वो समझ लो, पूरा उनकी वेबसाइट में से, लिटरेचर गूगल में से आपको मिल जाएगा। मैं काफी टाइम सबको बोलता हूँ, महादेव की आप आराधना करो या ना करो, गुगलेश्वर महादेव की अगर आप आराधना ठीक से करते हो आपकी प्रार्थना सफल हो जाए। ठीक है, पर उसका पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है ना। Thank you so much, sir. Indeed, highly interactive session I have even ever had in my life. So that is, sir is expert in, interaction mode. Subject head to hai, there's a second point in it.
Big round of applause for sir. I would request Dr. Krishna Joshi madam to felicitate sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, now I happily announce the lunch break. Come back by 2:15, right? 2:30 को शुरू करना है, तो 2:15 you have to be back. Done. And there's a change in the venue, please. There's a change in the venue. There's a Nirami building, if you know. Ashwad building, you know, Ashwad Mass. First floor of Ashwad Mass, right? Not the cellar, the first floor, right? If there is any confusion,